Hello everyone, welcome back to my channel. We were doing chapter 2.3 recording of transactions, source document of accountancy of class 11. In this video I will explain you the formation of the voucher, how to prepare the voucher. Voucher means bill. So the meaning of the vouchers, some main vouchers and the types of accounting vouchers. These I have already explained in the earlier videos. If you have not watched that video, you can see the link that is provided in the description box. In this video, I will explain you the formation of the voucher. So first of all, before starting, once again, I will tell you that voucher means a bill, and by these vouchers, entries are made in the accounting registers. In bills को देख के accounting registers में entry होती है, and every business has their own printed voucher. सारे business के अपने खुद के printed vouchers होते हैं according to their need. So vouchers can be classified. Here I have written for recall, that this I have already explained in the earlier videos, but here I have written just for a recall. There are two types of vouchers, cash voucher and non-cash voucher. And cash voucher is again divided into debit vouchers and credit vouchers. Debit vouchers and credit vouchers. Transaction for which the cash goes out of the business. For this, the debit voucher will be prepared, and when the cash comes in the business, for this the credit voucher will be prepared. This I have already explained in the video. In this video I will explain you the formation of the voucher, how to prepare the debit voucher and how to prepare the credit voucher and the non-cash voucher. So without wasting the time, let us begin with the debit voucher. So first of all, we have to draw the debit voucher. So first of all, you have to write the heading debit voucher. We are drawing the debit voucher, so in the heading write debit voucher. Now one box I have drawn. Here you can see one box in the rectangle shape, because bill is in the rectangle shape. Have you seen any square shape bill? नहीं, bill तो लंबा होता है ना. Bill is in the rectangle shape. So here one rectangle I have drawn. Now we have to draw the debit voucher. So first of all, for any voucher, for any kind of bill, first of all at the top the name of the business is written. Business का नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर. So you can write any name you can write. So here I am taking the example. I am writing here Messrs Agarwal and Company. Messrs Agarwal and Company. Okay, any address you can write. I have written that address Messrs Agarwal and Company. Now this is not the Messrs. ये Mrs वाला Mrs नहीं है. This is Messrs. Messrs means business के आगे Messrs लगाया जाता है. ये Mrs वाला Mrs नहीं है. Okay, Messrs Agarwal and Company. Now in the second line you have to write the address of the business. कहाँ address है उसका address लिखना है. So here I am writing खजूरी बाजार इंदौर. Any address you can write. खजूरी बाजार इंदौर. So here the address I have written Khajuri Bazar, Indore. First of all, the name of the business is written, then the address of the business is written. Now in the voucher, in each voucher, in every bill, the voucher number is printed. Voucher number print होता है, सब bill number printed रहता है. So here the voucher number will be written V.N. V.N means voucher number. V.N. Voucher number you can write any voucher number. 21. I am writing here 21 or 24 or 191 or 2000, whatever you want to write, you can write. So here the voucher number is printed. Then in the right side date is written. Here date option is given. Here you can fill the date. Whenever this transaction take place, you can write the date here. 3/10/2020. So in the right side the date is printed. Now we are making the debit voucher. अब debit voucher हम बना रहे हैं. So obviously the debit will be written here. यहाँ पे debit लिखा होगा and dash and one column for rupees and one column for पैसा. Rupees and पैसा. Okay. And इसमें rupees and पैसा. Now debit. This is clear. अब डेबिट हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द डेबिट वाउचर.
Now just have a recall, डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है? So if you remember, when the cash goes out of the business, whatever transaction, in any transaction in which the cash goes out of the business, for that debit voucher is prepared. So let us take one example in which the cash goes out of the business. आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें से कैश बाहर जाएगा? कैसे जाएगा? फॉर एग्जाम्पल परचेज, अगर हम कुछ खरीदेंगे तो कैश जाएगा, ऑब्वियसली कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस. सो हियर आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, परचेज. ओके, परचेज मीन्स परचेज विल बी डेबिटेड. जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर परचेज. हम यहाँ पे परचेज लिख सकते हैं. ओके, और एनी अदर एग्जाम्पल, सैलरी पेड. पेड सैलरी. पेड सैलरी मतलब सैलरी दिया. जब सैलरी दे रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. कैश बाहर जा रहा है. कैश बाहर जा रहा है किस चीज में जा रहा है? सैलरी में. सो फॉर दिस ट्रांजेक्शन वी कैन राइट हियर एज सैलरी. एनी ट्रांजेक्शन वी कैन पे. For salary paid, here salary will be written. If the purchase transaction is there, so here purchase will be written. Okay, salary account. This is clear. This debit voucher is prepared for which month? Which month salary has been paid? This will be written in the bracket for salary for the month of March, April, May, June, whatever. This is just an example. This is clear. Now how much salary has been paid? Suppose 6,000. Here in the rupees column 6,000, in the paisa dash, and here you can do the total 6,000. 6,000 total. Now this is the debit voucher. ये ऐसे बनाते हैं debit voucher. In the left hand side, signature is done. Signature of chief manager. Chief manager means manager of the business. Signature of the manager is done. In this side the signature of the chief manager is done, and in that side the signature of the accountant is done. Okay. Now if the amount of the debit voucher is more than rupees 500, if the bill or the voucher is more than rupees 500, then 1 rupees stamp is affixed on it. Here in this side 1 rupee stamp is affixed on it if the amount is more than rupees 500. Here stamp is affixed on it when the amount is more than rupees 500. Okay. And receipt from, ये बिल कौन लिख रहा है? सेलर लिख रहा है, जिसका एड्रेस यहाँ मेंशन है. हम कस्टमर है तो हम तो अपना प्रिंट थोड़ी ना करेंगे बिल. जो सेलर है, दुकानदार है, उसी का बिल प्रिंटेड होगा. तो यहाँ पे ये बिल लिख रहे हैं, मिसेस अग्रवाल एंड कंपनी. So here it will be written receipt from Messrs. Agarwal and Company. Receipt from Agarwal and Company, a sum of rupees 6,000. So here we complete the debit voucher. Now again I will explain you how to prepare the debit voucher. कैसे बनाना है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं ऑफ द बिजनेस. जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका नेम. सेकेंड में क्या लिखना है? Now again I will explain you how to prepare the debit voucher. First of all, the name of the business is written. In the second line, address of the business is written. Here voucher number is printed. In that side date is written. Debit voucher is preparing. We are preparing the debit voucher. So inside the debit will be written. In the debit, any transaction you can take, purchase of goods or the salary paid. But the transaction should be in such transaction should be there in which the cash is going out of the business. वही transaction correct होगा. अगर कैश आ रहा है बिजनेस में, अगर आप डेबिट वाउचर बनाओगे दैट विल बी रॉन्ग. सो व्हेन द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, फॉर दैट डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड. सो हियर वी हैव टेकन द सैलरी पेड. सो डेबिट विल बी सैलरी and amount. Here you have to write the amount in rupees column and the total of amount. Here the signature of the manager, and in that side the signature of the accountant, and here 1 rupee stamp will be affixed on it, and receipt from Shivlal Agarwal and Company, a sum of rupees dash and dash. So here we complete the formation of the debit voucher. Hope you understood this voucher. समझ में आया कैसे बनाते हैं? Now coming to the next voucher, how to prepare the credit voucher. Credit voucher कैसे बनाना है? So in the credit voucher, first of all the heading will be the credit voucher. It is same as the debit voucher, only one little small difference is there. So first of all you have to write the name of the business as in the debit voucher we have written.
First of all, the name of the company will be written, Messrs. Agarwal and Company. Any name you can write. In the second line, address of the business will be written, Khajuri Bazaar, Indore. In this side, the voucher number, and in that side, the date is written. Voucher number, you can fill the voucher number, any voucher number you can fill. Here I am writing 24. You can write 124 or 128 or 2000, whatever voucher number you want to write, you can write. Now in that side, date on which this credit voucher will be written, that date is written on the date column in the date side. Here I am writing the date and making the credit voucher. So inside the box you have to write the credit. In the debit voucher, inside the box we have written the debit, but this we are preparing the credit voucher. So inside the box we have to write the credit. Debit voucher बनाएंगे तो debit लिखेंगे, credit voucher बनाएंगे तो credit लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है. अब हमको क्रेडिट वाउचर कब बनाया जाता है, थोड़ा सा हम रिकॉल करें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. गोइंग टू बैक. Credit voucher is prepared when the cash comes in the business. Then the credit voucher is prepared when the cash comes in the business for any transaction. It can be for whatever the transaction is there. If the cash is coming in the business, in that case the credit voucher is prepared. So here we can take one example in which the cash comes in the business. For example, cash sales. कैश सेल्स मतलब बेचना, और जब आप कुछ बेचोगे तो क्या होगा, कैश आएगा. कैश आ रहा है, सो व्हेन द कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, एट दैट टाइम द क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड. सो ये कैश सेल्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे सेल्स लिखेंगे. अब कितने का सेल्स हुआ है, 5000, 6000, 500, 100, जितने का भी सेल्स हुआ है. इन द रुपीज कॉलम राइट द रुपीज, एंड इन द पैसे कॉलम डैश, and here you can do the total, and this side write the total. बस इतना सा आपको करना है. क्या करना है, क्रेडिट लिखना है, फिर एक ट्रांजेक्शन को रफ में लिखना है जिसमें भी कैश आ रहा है. कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले सकते हो जिसमें कैश आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला, कमीशन मिल रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कमीशन की एंट्री हो जाएगी. सेल्स अकाउंट, ये क्लियर हो गया. एंड इन द रुपीज कॉलम रुपीज, कितने का सेल्स हुआ है, एंड द टोटल ऑफ दैट अमाउंट. क्लियर. And in the last, again it is same, both sides the signature is done. In this side the signature of the chief manager is done, and in that side the signature of the accountant is done. In this side the signature of the chief manager is done, in that side the signature of the accountant is done, and after their signature only this document becomes the valid document. So here we complete the credit voucher, and hope you understood the how to make this voucher. It is very simple and easy. First of all, you have to write the name of the business, then address of the business, in this side voucher number, that side date, in the between credit or any transaction, take example of any transaction and fill that column, and amount, signature of chief manager, signature of accountant. Now moving to the next voucher, that is the non-cash voucher. Now how this voucher is prepared, कैसे इसको बनाया जाता है. First of all, in the heading write the non-cash voucher. जो बना रहे हैं हम उसकी heading लिखेंगे. Then again it is same as the debit voucher and the credit voucher. There is a slightly little bit change. So first of all, as usual, as we have written in the debit and the credit voucher, first of all we have to write the name of the company or the name of the business. In the second line, the address of the business will be written. In this side, the voucher number will be printed, and in that side, the date will be written. The difference between the previous voucher and this voucher is that in the debit voucher, when in the debit voucher, inside the box only debit was written. In the credit voucher, inside the box only the credit was written. But in this non-cash voucher, debit and credit both will be written. In the debit voucher, we have written only debit. In the credit voucher, we have written only credit. And in this voucher we have to write both debit and credit, and rupees column and paise column, and in the last signature of the chief manager and the signature of the accountant. The difference, only one difference is there, that we have to write the debit and the credit both. Now how to fill this? Now we have to fill this. First we have to take one example, and before taking an example we should know that when these non-cash vouchers are prepared, ये कब बनाया जाता है. As from the name it is clear that non-cash, जिसमें कैश नहीं है, non-cash voucher मतलब बिल, वो बिल जिसमें कैश नहीं है, मतलब उधार का बिल होगा. So it can be the cash, it can be the credit sales, or it can be the credit purchase. So here I am writing example credit purchase.
दिस वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द क्रेडिट सेल्स और द क्रेडिट परचेज, या उधार में खरीदा गया हो या उधार में बेचा गया हो तब नॉन कैश वाउचर बनता है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक परचेस, उधार में खरीदा, परचेस मतलब खरीदना। जब उधार में खरीद रहे हैं तो किससे खरीद रहे हैं, उसका नेम भी होगा, फ्रॉम संपत साड़ीज। फ्रॉम संपत साड़ीज। क्रेडिट परचेज फ्रॉम संपत साड़ीज, उधार में खरीदा संपत साड़ीज से। दिस इज द ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड फॉर रुपीज 2000 का उधार में खरीदा। दिस इज द ट्रांजेक्शन। फॉर दिस ट्रांजेक्शन वी हैव टू प्रिपेयर द नॉन कैश वाउचर। In the exam, it will be written, this is the transaction and prepare the voucher for the following transaction. कौन सा वाउचर बनाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्रेडिट दिख रहा है, खरीद रहे हैं क्रेडिट में, उधार में, तब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उधार के लिए तो नॉन कैश वाउचर बनता है, तब हम इस ट्रांजेक्शन के लिए नॉन कैश वाउचर बनाएंगे। ओके, नाउ वी हैव टू फिल दिस ट्रांजेक्शन इन दिस वाउचर। सो हाउ वी हैव टू फिल? इन द डेबिट, इट इज अ क्रेडिट परचेज, उधार में खरीदा। सो इन द डेबिट परचेज विल बी रिटर्न। अगर सेल्स है तो सेल्स लिख देंगे, परचेज है तो परचेज लिख देंगे। ओके, किससे खरीद रहे हैं, किससे खरीद नहीं रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, डिटेल ऑफ द गुड्स, क्या खरीदा, यहाँ पे डिटेल लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 साड़ीज, जो भी यहाँ दिया होगा, यहाँ पे जो डिटेल दिया है वही हमें फिल करना, अपने मन से फिल नहीं करना। जो यहाँ डिटेल दिया होगा, 5 साड़ीज एट द रेट 400 ईच, एट द रेट 400 ईच। ये कहाँ से लिखना है, इसमें से देख के लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, हम इसको ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल में। सो परचेज 5 साड़ीज एट द रेट रुपीज 400 ईच, 5 साड़ी खरीदी, 400 रुपीज की ईच है। सो द टोटल अमाउंट विल बी 5 4 20 and 2 zeros, 2000 rupees and in the पैसे dash. Clear? Now one more column is the credit column. In the credit column, from whom the goods has been purchased, the name of that shop from the goods has been purchased should be written in the credit column. So here you can see that the goods has been purchased from the Sampat sarees. So in the credit you have to write the Sampat sarees. For any transaction you can, for any credit transaction you can make the non-cash voucher. Just you should know how to fill the non-cash voucher. कैसे बनाना है और उसको कैसे fill करना है. So here in the debit purchase, अगर सेल्स का होता तो हम डेबिट में सेल्स लिख देते और क्रेडिट में किससे खरीदा है या किसको बेचा है वो लिखते. क्लियर? In the total rupees 2000 and dash. This is the total. In the total rupees 2000 in the पैसे column dash and here it is the total rupees 2000. Clear? And as usual in the last, signature of the chief manager and in that side signature of the accountant will be there. And after their signature, this non-cash voucher will become a valid document. ये valid document हो जाएगा और इसको देखकर फिर अकाउंटिंग रजिस्टर में एंट्रीज होगी. ये जो वाउचर्स होते हैं, बिल होते हैं, इनको देख के अकाउंटिंग रजिस्टर में एंट्री होती है. तो अभी ये समझ में आया. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द फॉर्मेशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ वाउचर, दैट इज द डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड द नॉन कैश वाउचर. And I hope so you have understood these voucher, how to make these vouchers. And still if you have some questions related to these voucher, related to the making of these vouchers, you can mention it in the comment section. And with this we also complete the chapter 2.3 recording of transaction source document. In the next video we will meet with the new chapter. So till then stay tuned and stay blessed. Bye bye.